media and the platformization. Now, talking about all these issues, another important component for us, we have the question of cyber security or the criminal activities. So I talked about, I have given a kind of background that some of these new issues that has developed and something is happening. तो इसका क्या असर है, कैसे हम इसको साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेट करके देख सकते हैं. सी क्राइम, punishment, law and morals, this is the old one. Even in the sociology, even all the legal studies, in the social jurisprudence, we have also studied it very well. तो ये कोई नया चीज नहीं है. एक जमाने में गांव में एक आदमी पगडंडी के पास बैठकर लोगों को अनाप शनाप बकता था, और आज वो ट्विटर एक वैसे ही सेगमेंट है जहां पे लोगों को अनाप शनाप बक रहे हैं. सो दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द वन स्पेस टू द अदर प्लेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीडियम, नंबर वन. द सेकंड आइडिया इज अबाउट द पनिशमेंट. पहले आपकी लोग वहां पे पनिशमेंट करते थे गांव में, and आजकल you have maybe a capital punishment, you need a robust security provision to control that. तो कोई ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बदला है समय. तो यहां पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात है हमें ये सब चीजें जो साइबर सिक्योरिटी की डेवलपमेंट को समझने के लिए डिफरेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है. वी हैव ए primitive society, we had a nomadic life, but now we have entered into the knowledge mad, the nomad. It's a knowledge society. We are living in a knowledge society. So we have evolved from the one particular phase to the another particular phase. So primitive society की जो punishment था, जो आपको जो security था, that was very simple. It's very limited. क्योंकि आप एक दूसरे को जानते थे, आप समझ सकते थे, आपकी जो issues और threat था, that was completely different. Then we have evolved, moved to the agrarian structure. The structure is completely different. Then we have moved to the industrial structure. Now we are living in a phase of the post-industrial as well as the डिजिटल सोसाइटी. तो यहां पे आपकी सिक्योरिटी के रोबस्ट जो है कंप्लीटली डिफरेंट. जहां मैंने आपको कहा कि जब आप कंप्लीटली अवेलेबल है साइबर स्पेस में, जो फिजिकल स्पेस नहीं है, वर्चुअल स्पेस है, वहां पे आपकी कंट्रोल बहुत ही कम हद तक होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉन्स्टेंटली जब इंटरेक्ट करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आपकी आईपी एड्रेस को कोई कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है. हमारे किराड़ सर हैं, वो मुझसे सहमत हो गए. दैट्स अ सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेलेंस मैकेनिज्म. And the biometric system, though as a sociologist, we are a little bit, sometimes we are also critical about that. आपने कभी बायोमेट्रिक को समझने की कोशिश अगर किए होंगे तो आपने बाकायदा देखे होंगे कि आपकी जो बिहेवियरल डेटा को हर वक्त डॉक्यूमेंट किया जाता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिहेवियरल डेटा? योर वॉइस, योर वॉकिंग and which way you are behaving, that's one is the behavioral data. Then you have a physiological data. The physiological data आपकी iris, आपकी ears और आपकी जो DNA, these are another way to understand. So what is happening now when a particular organization or the state in the market, they are documenting this particular data, it has a intended as well as the unintended consequences. Intended consequences in a sense, for example, if the government is planning to transfer the data, transfer the money, you can use your Aadhaar to identify a particular kind of person. That we call the sorting. जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे तो अभी भी मैनुअल चेकिंग होता है. If you go to any international airport, maybe they won't touch you, but they'll only observe you and they'll identify you on the basis of your passport, and already all the data is storage over there. They'll rectify it. So in a sense, what I mean is that because we have the state is also thinking, okay, we'll use this particular data for the positive use. But there are also another way, the unintended consequences. Unintended consequences की बात आप जब करते हैं, अगर कोई साइबर क्रिमिनल को आपकी डेटा मिल जाए, they can do a identity theft. आप नहीं होंगे, कोई और होगा जो आपकी तरह आपका सारा काम कर रहा है. You must have seen many of these English movies and others, but that's the reality.
वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो क्रिमिनल एक्ट और क्रिमिनल पॉलिसी जो है उस पर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ गया है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं था या एग्रीरियन सोसाइटी में नहीं था, वो डिजिटल सोसाइटी में है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिसे हमें समझने की जरूरत है। सो therefore the digital space, cyber space and digital society में सबसे important component जो है आपकी personal data, right? So I have come from Delhi and you know all we have a cities, Noida, Gurgaon and all these IT city, and where the people what they are doing, they are collecting the information, they are storing the information, they are cultivating the information and they are preparing different kind of big data source और उसको market में बेचा जाता है। और now what has happened, now the entire structure that converted us as a number, आप नहीं है, आपकी नंबर, आपकी जो पहचान है, whether it's Aadhaar, whether it's a mobile phone, that's the new development as that happened. When we are trying to understand the cyber security or the law and punishment, this is very, very important. Then again, another important point what has happened right now over a period of time, the circulation of the data and information, our private information is circulating in the different levels, in the different spaces, where starting from the personal to the business level, that's another way to understand whether it's a mobile data, because every other day, we all are producing n number of data sources. आपकी मोबाइल फोन की जो डेटा है ना, और जो आपकी जो स्पेस है बहुत जल्द खत्म हो जाती है। Have you ever imagined that what is happening and what has happened with your mobile phone? You must have seen that this is called the overload of different kind of information. आज हम निजी तौर पर बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं और वो डेटा आपके लिए पर्सनल हो सकता है, लेकिन मार्केट के लिए बहुत ही अहम डेटा है कि क्या आप कहां फोटो खींच रहे हैं, कहां आपने परचेज किया, कहां पे आपने विजिट किया। These are very, very important sources that how the market guys, what we call the capitalists, they are utilizing. We call the sorting. Social sorting is happening. On the basis of that, they will talk about the entire population. नहीं, ये population की इस तरह की behavioral pattern है। तो इसलिए हम लोग आज भी सर्वेलियंस कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो इसे भी समझने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग और एक सब अहम बात है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो है सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच में आप लोगों ने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिजिटल स्टॉकिंग, and someone is stalking you, constantly monitoring your cyberspace, is sending some messages. That's another way. वही सेम बात है। गांव के देहात में, गांव के उस कोने में बैठकर आदमी देखता रहता था आप क्या कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, आपने कैसा कपड़ा पहने हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। Now you have a different kind of individual and they're constantly monitoring. So that's another way, and we also call the digital spying. Digital spying and even you have a digital policing. जैसे आपको सीसीटीवी के बारे में सब लोग सुना है ना, जहां भी wherever you will enter, you'll find a board and आप सीसीटीवी के निगरानी में है। तो that means the ऊपर वाला इस सब देखता। You must have seen that CP जो सीसीटीवी के advertisement, and then you have to understand who is this ऊपर वाला. You must have heard about the Big Brother. Right, the Big Brother, that's a novel, and again you must have seen the Big Brother house, that's a Big Boss house. Now you can also imagine this is nothing less than a Big Boss house. Whether you are sitting here, because what I am doing, this stupid machine is recording everything, monitoring us. So then you have to also understand the whole idea of digital policing, whether the state is doing, whether the market is doing. That's another way to understand when I'm talking about the cyber security as well as your privacy. क्योंकि प्राइवेसी की जो डेटा अभी हमारे पास आया है, जो बिल हमारे पास आई है, उस पे अगर if you read minutely that you have every right to protect your data. The state will also help you out. So there are some of the challenges, what I mean to say, these are some of the challenges, how the cyber security is related with your internet. It's related with the vulnerability of information. It's related with the Trojan horse, right? All the mythical stories, now it's converted to the Trojan horse. Then the viruses and the passwords, password theft, and as well as the phishing, different kind of content. So where you'll also find
email bombardment. Somebody will write something, they can theft your identity. These are some of the important cyber issues. This important issues in front of us. So therefore, the cyber crimes, which is associated with a different kind of cyber attack, as well as the unlawful act which is happening in the cyber space. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट होने के नाते हमें समझने की जरूरत है. उसके बाद और अगर हम साइबर क्राइम की जब बात करते हैं उसमें एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट भी है. कुछ चीजें इंटरनल भी होता है और आपको पता नहीं, आपके जो दोस्त आपसे सबसे अच्छा दोस्त है वो आपसे दुश्मनी निकालने के लिए किसी दूसरे फेक आइडेंटिटी से आपको परेशान कर रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं. दिस कैन हैपन एनी टाइम. उनको आपके बारे में ही इज कंप्लीटली अवेयर अबाउट यू एंड मे बी ही कैन आल्सो ब्रीच your cyberspace, will do something. Then again, we have an external, what I cited, that we have an n number of hackers. They are also hacking our cyberspace, and they are doing some kind of organized act, and they are also entered in our economic space. They have also hacked your credit card, so and so forth. So therefore, the question arises for us, in fact, as a state or as a society, we are concerned about our cyber security, we are concerned about our data protections, and we are also concerned about the private sensitive information and how and at what extent the people, they are selling our information. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा है, जैसे आपकी मोबाइल नंबर है वो मार्केट में बेची जाती है.